हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये मैंने कैनवास पेड लिया है और इसके ऊपर मैं चारों तरफ से मास्किंग टेप लगा दूंगी। फ्रेंड्स, कभी भी कैनवास पेड के ऊपर आप डायरेक्ट स्केच मत कीजिए। पहले कोई भी जेरोक्स पेपर या फिर कोई भी पेपर पे बना के और उसके बाद आप उसको ट्रेस कर लीजिए। अभी देखिए मैंने ये कर लिया है और अब मैं कलर स्टार्ट करती हूँ, तो आप मेरे इस कलर को एंजॉय कीजिए।
यहाँ ब्लैक से मैंने शेडिंग दिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। लाइट ब्राउन पहले माला के ऊपर करके मैं अब उसके ऊपर वाइट का इफेक्ट दे रही हूँ, जिससे ये वाइट खिल के आएगा। अभी मैं लाइट ग्रीन का यूज़ कर रही हूँ थोड़ा साड़ी के ऊपर। अभी मैं यहाँ पर स्काई ब्लू का यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले, और उसके ऊपर से मैं वाइट यूज़ करूँगी। यहाँ मैंने स्पॉन्ज की सहायता से ये वाइट कलर को किया है, इससे थोड़ा बादल बादल इफ़ेक्ट आएगा और ये अच्छा लगेगा देखने में।